अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म, बड़े बड़े कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, आप कंट्री हेड, सीटीओ, सीओओ, सीईओ, इतने यंग एज में आपने इतनी बड़ी पोजीशन यू हैव एक्वायर्ड। यंग एज में सीईओ बनना इजी है या फिर व्हाट वाज द चैलेंजिंग थिंग इन योर जर्नी? Let me not speak about it first. रौनक, हम एक काम करेंगे, and this is a very very unique unveiling for the entire people lot out there. अगला 1 मिनट और 47 सेकंड मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ रौनक, जो अभी तक किसी को नहीं दिखाया है और ये किसी ने नहीं देखा है. Because you people are on this podcast with Ronak and on this special edition, let us look at this and then I will come back quickly and let you know more about your report. To be honest, I was also very excited to host Mr. Sunil Chopra. Before delving into the podcast, I want you to hear something about him. I have something on my screen, and I will read it for you. 3 decade plus of extremely distinguished corporate journey, product of one of the top IIM, an awarded CEO, successful entrepreneur, experienced board director for over 2 decades, enabled several global companies like Xerox, Nokia, Z Capital, Shapent to win in India, has immense love for people, drive to win, habit of celebration, and of course, infectious energy. So, why you should watch this podcast? 3 reasons. If you are an aspiring leader, you want to become exceptional leader, you should watch this podcast. If you are an aspiring entrepreneur, you want to become extraordinary entrepreneur, this podcast is for you. And if you're someone who already know who is Mr. Sunil Chopra, and many of you might not knowing him, that who is he, then of course you should watch this podcast, because Sunil Chopra is going to reveal for the first time your win coach, how to get your win coach. So stay tuned and go enjoy the podcast. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग विद सो मच ऑफ वार्मथ. आपने काफी बोझ डाल दिया, भार डाल दिया मेरे पे लेजेंड वगैरह बोल के. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यस, आई हैव लर्नड अ थिंग और टू इन लाइफ एंड वुड बी हैप्पी टू शेयर दोस इन दिस वंडरफुल सेशन. रौनक, या सुनील सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारी जो ऑडियंस है ये यूट्यूब चैनल की, राइट, वो लोग काफी लीडर माइंडसेट के लोग हैं. लाइक दे हैव ग्रोथ माइंडसेट, दे वांट टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ. like 90% of our audience wants to become multi-millionaire in their life, and today they are going to get multi-millionaire advice from you, right? So sir, first of all, thank you so much for taking out your 30 minutes. और इस 30 minutes में हम लोग बहुत powerful discussion आज करने वाले हैं. So viewers, stay tuned and stay to the end of the podcast, because आज कुछ नई secrets भी आज reveal होने वाली है मिस्टर सुनील सर के behalf से, right sir? 1800 सेकंड है, उनमें से कुछ हमने यूज करे हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आई होप टू मेक एवरी सेकंड काउंट. तो आपने पूछा एंड यू आस्क्ड दैट देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, एंड आई वांट टू वेलकम ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. उम्मीद करता हूं व्हाटएवर वी आर गोइंग टू शेयर विल बी यूजफुल फॉर यू. एंड वेल, आई हैव हैड मेंशन अबाउट 20 इयर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी नाउ, राइट. और 4 जुलाई 2004 को शुरू करी थी, एंड वेरी रिसेंटली एक्चुअली कंक्लूडेड 20 इयर्स ऑफ दैट. एंड इफ आई हैव टू पिक अप द nuggets of learning from there, उसके लिए मुझे आपको एक सीन पे लेके जाना पड़ेगा रौनक, and everyone just stay with me. Like movies, they take you back in time, right? So I was the classic corporate honcho, had got big breaks in life and was working with an American consulting firm, was a big brand in India at that time, Sapient, 250,000 square feet of office space, 2 towers, 6 floors each, almost 1,000 people team, director and country head of India, doing multi-million dollar deals. Our teams used to be cracking those global deals. Right. Flying business class, British Airways, Delhi, Massachusetts, where we had our head office, in Boston. ये पूरा माहौल था. Right. And then became an entrepreneur by choice on 4th of July 2004 in a basement in Vasant Kunj. 2 people, 2 bean bags, a sweet little pet, and a lot of hope and aspirations, and a list of people that we were going to call to tell them, we are entrepreneurs now. Please do business with us. Right. So when we started this journey, we suddenly realized that being an entrepreneur, what it meant. And I'm going to give a 4 E and T. तो अगर आप इसको इस तरह से समझें, it's like a tea. ये कड़क चाय है. It's like a tea. It has got E and 4 और उससे पहले एक T है. So it's a TEA
and A. The 4 is looking like an A. तो E4 मॉडल है, साथ में एक TB है. मैं बताता हूँ ये 4E मॉडल क्या है. First things first. As entrepreneurs at any stage, particularly those who are starting anew, you need to leave your E for ego. Let the ego go. Right. So these ये जो मेडल तमके हमने पहन रखे होते हैं, कंट्री हेड, CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोर्ड डायरेक्टर, investor, millionaire, billionaire, whatever else. So the moment you become an entrepreneur, you have to let go of your ego by your bedside. Right. Ego. उसको छोड़ दीजिएगा, उस ego छोड़ के आइएगा. Start afresh, start thinking of it as someone who started from the campus with the same thought. I'm going out to people. I'm here to learn. I'm here to also help out. The only difference is you have wisdom if you have experience. So you're not starting from scratch, but you have to let your ego go. तो सबसे पहले वो मेडल वो तमके हटाने पड़ते हैं, because if we kept thinking we were doing multi-million-dollar deals, this is how we used to fly, this is the kind of people we met, this is the kind of offices we had, we would not have been able to fight that battle of the entrepreneur. Right. तो 40,000 फुट से सीधा धरातल पे आ गए थे, in a way, figuratively and practically. So that was the first lesson, the first E. The second E is about energy. बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा ईंधन. You need a lot of fuel to fuel your fire and the fire in the belly, because a lot of times you will start alone probably. If you're lucky, there are co-founders, there are 2 or 3 people, whatever else. So you will start practically alone with an idea, and you will need a lot of energy at that time, because you will feel a lot of times that this is coming down, this is not working, disappointment, people not responding. मैं लिखता जा रहा हूँ, जवाब नहीं आता है तो मेरे चाह का जवाब नहीं आता है. And even when we go forward, eventually the deal never gets signed and you can get disappointed, depressed, हताश हो सकते हैं. Very important. बहुत सारा ईंधन और बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है. So please be very mindful that you will need a lot of energy, which is the second E as an entrepreneur. Third lesson, energize others around. तो मुझ में तो ईंधन आ गया, मुझ में एनर्जी आ गई. Now there are teams, you start spreading, you start becoming slightly bigger. आज 1 थे, अब 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं. You will keep getting people in your teams and they will go through the same experiences themselves. जो आप खुद कर रहे थे अकेले, अब उनकी भी वही जर्नी होने वाली है. उनको भी शुरू में कभी कंफ्यूजन होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी, ईंधन डाउन हो जाएगा. In a small little team, when you're trying to build a business, you will need everyone to be extremely energized and be at the same level. ऐसा नहीं हो सकता कि इंजन के आगे के डब्बे 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हैं और पीछे के डब्बे 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हैं. Right. You can't have the train running together at 2 different speeds. So my friend, if you are going to let someone run at 70 kilometers, then remember the strength of the chain is only as strong as the weakest link. तो अगर कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रहा होगा तो वो 150 की ट्रेन को 50 पे कर देगा. आप उनको 150 पे अगर नहीं लेके जा पाए. Fact, it is fact. So as an entrepreneur, while you have that energy within yourself, you have to make sure that you can make others also run with you at that speed, with that conviction, with that clarity, with that commitment, and hence energizing is as important as having energy. And there's a small little tip here again, very quickly. It's about celebrating small little wins very often. ये बहुत जरूरी है. Please understand all those out there at any stage of your entrepreneurial journey, particularly when you're starting off. We used to celebrate at a time, Ronak, when we used to think यार multi-million-dollar deal आएंगी, इतनी आएंगी. फिर हमने कहा नहीं भैया, थोड़ा लेवल कम कर लेते हैं. हो सकता है we get a $100,000 deal or whatever else. कुछ 30 लाख 40 लाख का काम आ जाएगा. 5-10 करोड़ की डील नहीं आएगी. अब हम वो कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह गए ग्लोबल कंपनी के. Then we realized that we started celebrating even getting a request for a proposal, RFP. So if some good brand, a big organization would invite us, कि आइए अपनी कंपनी के बारे में बताइए, पिच करिए, come and pitch your services, your products to us. We used to celebrate that also. पूरा mindset change हो गया. And that helped us actually engage better, give it more, and hence then we started seeing that whole funnel convert and start getting revenues. Right. तो अगर आपको energize करना है, उसका तरीका ये भी है कि आप इस पे वेट मत करिए. My first year target was $1 million, exiting with 15 clients, blah blah blah, so many offices. The first deal you cracked, the first thing you did
that actually gave you any kind of enthusiasm and the belief in and the faith that you're on the right track, उसको celebrate जरूर करिएगा. एक आदमी तो एक आदमी celebrate कर ले, दो हैं तो दो कर ले, तीन है तो तीन कर लेगा, but make sure that you celebrate small little wins at every stage. Make this a habit. Don't forget, this is energizing. ये ईंधन बढ़ाता है, सबको 150 किलोमीटर पे लेके आता है. Fourth E, finally, execution. It will all boil down to execution. So a lot of times we as entrepreneurs have an immense train of ideas. ये idea, वो idea, ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं. No, we will always get excited and then we will encourage each other on the ideation part of it. The planning, strategizing. Somewhere along the line, we start believing and feeling that we are at the top of the funnel, at the top of this whole thought leadership, and something will happen and it will execute, or someone else will execute, or we will hire someone to execute it. Don't even think about it. As an entrepreneur, don't even think about it. और मैं बताऊंगा नहीं, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस आपको पता है आज भी, कस्टमर्स बनके और सर्विस प्रोवाइडर्स बनके, from the biggest platforms, quick commerce, e-commerce, people go out in the field themselves, QSR space, restaurant space, right. Big restaurateurs they will become that, person in the hotel, or the hoteliers do that in hospitality industry. You never know, they go on the ground. Right. Anonymously and try and spend a day with the customers trying to figure out what's happening on the ground. You can never let execution go away from you as an entrepreneur at any stage of your journey, particularly at the start. वो सारी गलतियां, वो सारे लूपहोल्स आपको खुद अपने हाथ से करने हैं, देखने हैं, ताकि when people come next and when you're scaling up, you right. don't scale up your execution issue. Very important point it is, because execution बहुत बड़ा role play करता है, and it should be under the hands of leader. So that is the 4 E's. अब आखिरी टी, अब चाय बनाने के लिए टी तो चाहिए भाई, right? ना भाई, चाय बनाने के लिए टी तो चाहिए ना, of course चाहिए. The T stands for the team. The team, the people. Handpick an average business idea with a great team, a great business idea with an average team. Generally speaking, my belief, and भैया पहला वाला देख लेना, the team will make a lot of difference. A great team can make an average idea look great, but an average team could make a great idea look very average or even bad, and very quickly. Right. So invest in people, invest in getting the right people, the right team, because particularly initially in a small team, everyone really, really counts, and they have to make it count. So a lot of times we get stingy there. We try and cut corners. We try and think of it as, ठीक है, हम सब कुछ देख ही लेंगे, कुछ लोगों की टीम चाहिए, need 1, 2, 3, 4. Don't call them as head count. ये head count नहीं है, ये packs नहीं है traveler वाले. These people are the people who are going to help you build the organization and the business. So make sure you're investing in the right talent and the team at start. So this is what I believe this is my formula of that T. जैसा मैंने आपको बताया कि चाय है TE4, where you have 4 E's and a T, and that has been my learning in this entrepreneurial journey for 20 years, Ronak. And सुनील सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि आपने 20 years of your successful entrepreneurship journey, and you have enabled thousands of business startups and companies. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि how to एक कंपनी का जो स्केल होता है 0 to 1, फिर 1 to 10, and then 10 to 100. So what are your advices for aspiring leaders who wants to grow their business from 0 to 1 and then 1 to 10, from your 20 years of successful journey, right? Okay. So let me put it this way, Ronak. See, there are things which will get different at different points in time. 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100. I will try and articulate it very briefly. The one thing that doesn't change, and I will come back to this once again. मतलब, let me put it this way. मेरे ज़हन में इस वक्त Kotler का 4P model, क्योंकि I was also from one of those blessed institutions where I was taught marketing by great professors lot many years back at the IIM. And 4P model होता था. 4P model marketing के अंदर ये बताते थे कि भाई सही टाइम पे सही कस्टमर को सही चीज दे दी जाए, प्रोडक्ट दे दिया जाए. How do you do this with the 4Ps? You have a product, you have a place, you have a price, and you have promotion. तो ये 4 चीजें आप करते हैं, लेकिन इसमें एक 5वां P होता है जो मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आया. The 5th P is people, and I'll say this again. So no matter at what stage your business is,
and listen to this very carefully. And I'm speaking from experience where so many people have approached me. कई बार लोग ये बोलेंगे 0 to 1 जर्नी में बोलते हैं, 1 to 10 में, 10 to 100, 100 to 1000 में भी बोलते हैं, because in 14-15 years of executive search, when I was actually guiding and advising boards of some of the Fortune companies on talent, and I've been on the other side as well, Right. as a CEO or an entrepreneur where you're looking for talent. What I'm going to tell you now, hopefully, if you will pay attention, you might be able to address one of your biggest problems as entrepreneurs. मेरे को हमेशा सुनने में आता है रौनक भाई, सुनील सर अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो रुकते नहीं हैं, क्या करें? So my friend, good people are not available off the street. अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, उनके लिए निवेश करना पड़ता है. You have to invest in people. Invest, right. You have to invest. So if you have to get a good, great person to your team, going back to the tea वाला टी, चाय में जो टी थी, जो टीम थी, मैं उस पर दोबारा वापस आ रहा हूं. 5P में बता दिया, 4P तो कॉटलर जी ने बताए थे, 5वां P, क्योंकि वो 4P सबको पता है मार्केटिंग के. प्रोडक्ट भी होगा, प्रॉब्लम भी होगी, प्लेस भी होगी, प्राइस भी होगी. बट इफ यू डोंट हैव द राइट P, which is the fifth, which is the people, that is where those big brands, the great brands, have understood and executed those 4Ps separately or differently, because they're the fifth P, which is people, investing in people. So at any stage of the journey, first of all, having a great team, great people is very important. तो निवेश करिएगा लोगों को लेके आने के लिए. I always prepared and still do prepare a lot when I am taking an interview. I prepare a lot for that candidate. Right. एक अच्छे candidate को मुझे, I have to ensure that they like us and our journey and our purpose and our organization, particularly when you're entrepreneurs, because you're always looking out for the best. अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, यकीनन नहीं मिलेंगे. Right. आपको किराने की दुकान पे नहीं मिलेंगे, घूमते हुए नहीं मिलेंगे. जो मिलेंगे, बुरा ना मानना, and I'm not being judgmental, people who are chasing you are not probably the people you wish to hire. But then you can't sit, because people feel I am the entrepreneur, मैं ओनर हूं, तो मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूं. अब उसने इंटरव्यू लेनी है क्योंकि वो जॉब लेने आया हुआ, तो तैयारी वो करके आएगा. मुझे कई बार बोलते थे, सुनील, why should I be preparing for this interview? Right. I'm the entrepreneur, कंपनी तो मेरी है, तैयारी तो वो करके आएंगे. तो मैं उनको कहता हूं, जनाब एक बात समझ लीजिएगा, जिनकी जरूरत आपको, the kind of people you're looking for are being sought by several other great organizations like yourself or even better. So you are competing for great talent always. The market is never down for them, my friend. कभी गलती मत कर लेना. ये अच्छे लोगों के लिए मार्केट कभी डाउन नहीं होती. मार्केट जब डाउन होती है, उनकी कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जरूरत और होती है. When the times are tough for the industry, they need still better people, because they are the ones who can save them. And hence never be misguided or have that wrong notion, misconception कि यार अभी तो मार्केट वैसे ही टाइट है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं. जो लाइन लगा के खड़े हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उनके लिए लाइन लगा के खड़े हैं लोग. So make sure you're always investing in people and fighting for the talent and investing in. And the second thing is, in this journey, how it differs at times. Think of it again. मैं ट्रेन का एग्जांपल लेता हूं. When you're starting your journey in 0 to 1, or let's say 1 to 10, sometimes the misconception is कि जो मैंने 0 to 1 में करा था, उसको कंट्रोल भी कर लूंगा, 10 times multiply हो जाएगा. जो चीजें मैंने 0 to 1 में करी थी, exactly वही करेंगे. And I have seen so many entrepreneurs make a mistake that they feel, अब मैं धीरे धीरे इसमें से निकल के, ये अब ऑटो मोड में चला गया सुनील. They start telling themselves this is gone in auto mode at any level of scale. थोड़ा सा एस मिला, 2-3 करोड़ का बिजनेस हो गया, 4 करोड़ का, 25 लाख महीने आ रहा है, अब तो ये ऑटो में चला गया. अब कुछ और देखते हैं फटाफट से, लेट्स डू समथिंग एल्स आल्सो, कुछ और भी साथ शुरू कर देते हैं, एक और इन्वेस्टमेंट देखते हैं. They start believing this auto mode. It can never scale up, because what you did in 0 to 1 will not necessarily take you from 1 to 10, और वही चीजें आपको 10 से 100 पे नहीं ले जाएंगी. वो चैलेंजेस अलग होंगे, वो काम अलग तरीके के होंगे. एग्जांपल दे रहा हूं, इफ यू मेड अ मिस्टेक व्हेन यू आर इन 0 to 1 जर्नी, रौनक, यू हैव इवन ऑप्शंस ऑफ अ वेरी ड्रामेटिक एग्जिट. कि ठीक है, गलती हो गई, करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, नई बात बनी, 30-40 लाख का बिजनेस हुआ था, छोटा सा ऑफिस था, 2 लोगों की टीम थी, कुछ ज्यादा निवेश नहीं करा था. आई डिड नॉट टॉक टू मेनी पीपल अबाउट इट, आई डिडंट पुट टू मच टाइम एंड मनी, आई कैन वॉक आउट ऑफ इट. यू कांट डू इट विद अ 10 or 15 करोड़ बिजनेस नाउ. आपकी 100 लोगों की टीम है, आपके 2 फ्लोर का बिजनेस है, आपने किराया दे रखा है, आपने 3 महीने का एडवांस दे रखा है, आपके खर्चे हैं, आपके कस्टमर्स हैं, यू हैव अ नेम एंड रेपुटेशन, यू हैव क्रेडिटर्स, यू हैव डेटर्स, व्हाटएवर एल्स. यू जस्ट कांट रैप अप एंड लीव इट. दैट एग्जिट इज नॉट पॉसिबल नाउ. सो व्हेन योर ट्रेन इज नाउ रेडी, आप ट्रेन को यू टर्न, आप सोचिए कि सर अब मेरी बुलेट ट्रेन बन चुकी है, अब मैं 40 करोड़ पे पहुंच चुका हूं, अब ये ऑटो मोड में आ गई है, फटाफट से इसको छोड़ दिया मैंने.
If you have to change anything, you can't make a bullet train turn you. आप सोचिए ट्रेन फुल स्पीड पे भाग रही है, बड़ी ट्रेन है पूरी, उसको यू टर्न कहां से दे दोगे? Nope. अब तो मोमेंटम है उसमें. Hmm. So be very mindful. Do not get into this misconception of control C control V. What got me here will take me there. मैं अब इसके अंदर ये सेट हो चुका है, ऑटोमेशन मोड पे आ गया, ऑटो मोड पे. Yes, you keep hiring people, you make building again the same thing, the same team. They will help you. You have great teams, then you can start slowly transitioning into other things, but you can't leave your eye off the dashboard. Right. नजर नहीं हटा सकते, नजर हटी दुर्घटना घटी. Hmm. तो ये ऑटो मोड, ये अपने आप चल पड़ा है. अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ऐसे ही चलेगा. एंड योर लायबिलिटीज, योर इन्वेस्टमेंट्स चेंज विद स्केल. सो बी माइंडफुल ऑफ द implications ऑफ योर डिसीजंस. दे आर डिफरेंट. Hmm. 10 से 100 वाली गाड़ी के अलग implications होते हैं. So as you scale up, be mindful of this as well. And like I said, a common thread is that please make sure that you're always focusing on investing in people at any stage. वो पहले वाले, दूसरे, तीसरे पड़ाव में किसी भी जर्नी के अंदर, they will remain a pillar on your growth, your sustained growth, consistent growth, predictable growth. It is a very practical thing you have shared, because autopilot mode what we have shared is very practical and it is applicable, right? And sir, इसी से related मेरा एक दूसरा ख्याल है मेरे mind में, just wanna ask you that आप American consultancy firm, बड़े-बड़े companies, global companies, आप country head, CTO, COO, CEO, इतने young age में आपने इतनी बड़ी positions you have acquired. So I mean there are young audience who are actually viewers of the podcast. So what are your advices for young aspiring or emerging leaders की young age में CEO बनना easy है, या फिर what was the challenging thing from you, I mean in your journey, and was that overwhelming? So I mean, what are your insights in regard of this? Okay. So yes, I will not deny I was probably lucky and blessed. I had great mentors who had prepared me for this journey. I worked with great organizations, great learning grounds. Xerox tha, chahe Nokia tha, chahe GE tha, that led me to that one of the, I was one of the youngest telecom CEOs at that time when I got this option in 2000. Right. To lead a very large project and very significant. But yes, I think, let me put it this way. मैंने इसको सबको बड़ा अपने लिए सिंप्लीफाई कर दिया था. बता रहा हूं कैसे. दो चीजों को जहन में रखिएगा हमेशा. दो चीजों को जहन में रखिएगा. पहली चीज, डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग यू आर गोइंग अप द लैडर. मैं एक एग्जिस्टिंग पूरे के पूरी सोच को कहीं ना कहीं किसी तरीके से ड्रामेटिकली तोड़ने वाला हूं. ओके. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आर मेड लाइक अ पिरामिड. ऐसी शेप होती है, नीचे ब्रॉड, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं ना. एग्जीक्यूटिव था, एएम हो गए, डीएम हो गए, मैनेजर हो गए, एजीएम हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, वीपीज, एवीपीज या डायरेक्टर्स हो गए, फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सी हो गए. वी ऑलवेज कीप इमेजिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द कंस्ट्रक्ट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट्स एंड गोइंग लाइक अ पिरामिड. मैं टॉप पे आ गया. तो होता क्या है, इफ आई थिंक आई एम द सीईओ एंड नाउ आई कैरी दैट वेट ऑन माई शोल्डर. मैंने वही चिप वाली बात करी थी, ये भी कहीं ईगो से कनेक्टेड है. Right. I never assumed that to myself that now I'm sitting at the top of the organization. Everyone is below me. Now I have to figure out a way to run the organization and tell them what to do. Because I am the CEO. बताऊंगा तो मैं, क्योंकि मुझ में ही सारा ज्ञान है. मैं सर्वशक्तिमान हूं. I never assumed that weight. I simplified it by making it a circle in my head. मैंने एक सर्कल बना लिया. सेंटर में कस्टमर को बिठा दिया. जो भी करेंगे कस्टमर के लिए करेंगे. सर्कल में कौन बैठे हैं? There's me, there's other people in my team. कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी है, पेंट्री वाले भी हैं श्रीमान, मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव भी है, मेरा टावर खड़ा करने वाला आदमी भी है, मेरा रेडियो देखने वाला आदमी भी है, मेरा स्विच चलाने वाले भी हैं, मेरे फाइनेंस मैनेजर भी हैं, मेरे एचआर मैनेजर भी हैं, मेरे tech, everything, they're all there in that circle, Ronak. And listen to me very carefully, guys, and I'm going to tell you this, and this is probably again relevant for a lot of people out there and anyone who looks at organizations. हम हमेशा कहते हैं it's lonely at the top, Ronak. Lonely at the top. भाई lonely at the top होगा क्योंकि टॉप पे जाके खुद ही बाय चॉइस बैठ गए. तो आपने कहा मैं टॉप पे हूं, मुझे बताया गया मैं टॉप पे हूं, तो टॉप पे हूं तो अकेला हूं, कॉर्नर रूम में अकेला बैठा हुआ हूं मैं, दरवाजा बंद करके. So how will I not feel heavy? I go light. मैं ट्रेवल लाइट कर रहा हूं. मैंने अपने आप को हल्का कर लिया कि भैया मैं सुनील चोपड़ा, मुझे सब कुछ नहीं आता. Dearly beloved, thank you very much for inviting me. I told my board, I told my teams, I welcomed everyone.
आई सेड सबसे पहले बता देता हूँ भैया, मेरे को सब कुछ नहीं आता है, जो मुझे आता है बड़ी अच्छे से आता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कंट्रीब्यूट करने की. What I can do in terms of envisioning and sharing the vision, what the organization is thinking, but we'll build it collectively. Systems, processes, etc. We'll all build it collectively. मुझे सब कुछ नहीं आता है, यकीन मानिएगा. तो मुझसे उम्र में बड़े 15, 20 साल बड़े लोग थे. My CFO, my CTO, CMOs, they were all very, very senior to me. The board was, of course, there. I never ever thought that I am the one who's running the show completely. So I made a circle of organization, like the circle of life. सेंटर में कस्टमर को बिठा रखा था, हम सब उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे. सर्कल का रेडियस बराबर होता है, सब मेरी नजर में बराबर थे. हर कोई अलग अलग चीज कर रहा था, मैं भी कुछ अलग कर रहा था, उनके ऊपर नहीं था, सोच से भी और अदरवाइज. सो आई decided to break that organization chart and hierarchy, and I'm not at the top. And secondly, I always was a sponge throughout. स्पॉन्ज का आता, अगर पानी के अंदर बड़ा जोर डाल के उसको डालिएगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती, नहीं तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है. अगर आप स्पॉन्ज को देखेंगे, पानी में कभी डालिएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा रौनक, वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा. लेकिन अगर उसको जोर लगाएंगे, हिम्मत करेंगे, नीचे तक ले जाएंगे, इट विल बिकम हेवी बिकॉज इट विल सोक ऑल द वाटर. राइट. एंड नाउ व्हेन यू टेक इट और उसको निचोड़ेंगे तो बहुत सारा निचोड़ निकलेगा, क्योंकि उसने हिम्मत करी तय तक जाने की, टू गो डाउन, बी ऑन द ग्राउंड, बी विद द टीम्स, सी व्हाट्स हैपनिंग, लर्न फ्रॉम देम, डू दिस without any egos and chip on the shoulder of being a CEO, COO, board director, whatever else. They will help you. They held hands. सर्कल में सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है दोस्त, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है. सोचिए कितनी जबरदस्त चेन, और सेंटर पे कस्टमर बैठा हुआ है. That is those are the things that I think I learned, and those are the two learnings for me, that how not to sit at the top alone by choice, bigger jobs, and as you go up the hierarchy and carrying people along with you, and not necessarily saying that मैं ऊपर हूं. और स्पॉन्ज बने रहो, like they say, stay foolish and stay hungry. तो स्पॉन्ज बने रहो, सोक करते रहो, लोगों से सीखते रहो. डोंट लुक एट कि नीचे है ऊपर है, किससे सीख सकता हूं. Right. It is actually a very resonating thing because हमारे जो young leaders हैं वो आजकल बहुत सारे books पढ़ रहे हैं. So I would recommend कि हमारे जो अभी एक legend बैठे हुए हैं, जिनके पास इतना सारे expertise है, इतने years का expertise है, who have been a phenomenal person in his entire journey. So it is very practical thing, and viewers should learn from your kind of leaders who are mentoring the startups, who are mentoring thousands of companies and actually building companies. So it is very practical thing you have shared, sir. I was actually reading your recent post on LinkedIn. मैंने बहुत अच्छी बातें पढ़ी about your recent loss of your father, right? It is very tragic thing, and बहुत सारे good stuff you have written about your father. But it is great to see you back again in actually your previous action, right? And sir, one thing that intrigued me while seeing your post was hashtag your win coach, right? So when I first time noticed that, whoa, I mean, what is this? I mean, what is your win coach? Because one thing, there are millions of coaches entire in the nation, right? I mean, आप हर 5 किलोमीटर के बाद एक आपको घर मिलेगा, कोच उसमें बैठे हुए हैं. There are a lot of leaders. I guess Sunil Chopra sir has started a new a kind of initiative. That what is your win coach? So I mean, first of all, tell me about that. What is your win coach? And answer me. I mean, I'm very excited to know about it. Okay. Well, thank you very much for your kind sentiments. And yes, we celebrated my father's 88 years of life, and there was no regret there. And he actually taught me and taught a lot of people around how to have a life beyond limits. And that's what I talked about. I always have him around. And this is where he is always with me. Right. My father, which is about life beyond limits. Yes. Gee. So, and this is his mesmerizing and energizing persona. So it's a blessing, and he's always around, and I've learned a lot from him. He's my inspiration. So he's been my guru and my coach. But yes, your win coach. All right. So what I will do is, let me not speak about it first. Ronak, हम एक काम करेंगे, and this is a very, very unique unveiling for the entire people lot out there. Next 107 seconds, अगला 1 मिनट और 47 सेकंड मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं रौनक, जो अभी तक किसी को नहीं दिखाया है और ये किसी ने नहीं देखा है. Because you people are on this podcast with Ronak and on this special edition, let us look at this, and then I will come back quickly and let you know more about your research. Right.
Wow, sir. I mean, what a fantastic it is initiative. I mean, I was amazed. I mean, the kind of words I am seeing, the kind of initiative you have taken. It is something unconventional. I have never seen this before, and actually never heard this before. So please, tell me, something about this. That how can people actually आपको वो लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसके लिए कि ये योर विन कोच है क्या, और हम लोग जल्द से जल्द सुनील सर से कैसे कनेक्ट करें, और लोग अपने विन कोच के साथ कैसे उनके साथ एक काइंड ऑफ कनेक्शन बनाए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस योर विन कोच, राइट? So let me put it this very clearly. I love storytelling. Probably take a 2 or 3 minute thing to just let you know quick storytelling on this. So I take you back 50 years in time because I'm celebrating 50 years of winning. I was all of 7 years in my second standard in school, and there was a race announced for 100 meters. कक्षा में सबसे पूछा गया कि आप अपने हाथ खड़ा करके please volunteer if you would like to participate in the sports day for the 100-meter race. I had never raced in my life. I had never run. I had never done anything formally in sports. I raised my hand. I went to the field. I had seen my elder sister win medals and run. She was a very, very good runner. मुझे दो चीजें समझ में आई थी रौनक उस दिन. There were about 30 of us at the starting line of that 100-meter race, my first race in life. 30 लोग थे. 8 लेन थी सिर्फ, right? I was the tallest in the class. I was trying to figure out my chances of winning the race. क्या चांस थे कि मैं जीत जाऊंगा? मैंने आसपास देखा, क्लास में सबसे लंबा मैं था, सबसे पीछे बैठता था. So I knew that I was the tallest. I was going to have the benefit of the longest legs. Second thing, I had seen my sister move her hands and feet together. मुझे टेक्निक भी आती थी कि हाथ और पैर दोनों खूब तेज तेज हिलाने हैं. तो जैसी सीटी बजी, countdown, ready, set, go. I ran for my life literally, and I ran without looking left and right. And before I knew it, the PT teacher right in front, जिसके ऊपर मेरी नजर थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा. And before I knew it, I won my first race, the first win in my life. I was 7 years of age. I had won the 100 meters in my second standard. And before I knew it, he raised my hand, and soon I had a bunch of my friends come in and pick me up. कोशिश कर रहे थे मुझे कंधे पे उठाने के, उठा तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उठा रहे थे. I experienced the joy of being with a lot of people and friends. And the third thing, celebration. Right. वो तीन चीजें उस दिन मेरे जहन में अटक गई. For that moment in that day, they got stuck in my mind. The urge, the drive to win, the love for people, and the habit of celebration. Right. That stayed with me until right now, and it's been 50 years. And that's what I'm celebrating, because I realized, like you said, there are a lot of great coaches around. Right. There are life coaches, business coaches, and all due respect, they are doing great job. They are all to be celebrated. They are helping people, hand-holding them, showing them the way. But what I realized is that something Google Trends showed very recently, and it's not that I thought of this idea after that. You'll be amazed, everyone, I tell you that, and you can probably click that right now after the session and check for yourself. Last 12 months, if you look at India and you look at the Google Trends, almost 7 to 10 times the number of people who wish to get rich, wish to win. लोग जीतना चाह रहे हैं, अमीर होना नहीं चाह रहे, होना चाह रहे हैं. वो लाइन ऐसी फ्लैट सी जा रही है भाई, लेकिन जीत वाली लाइन उससे 7 से 8 गुना है. People are missing the joy, the thought, the experience of winning. And we've seen a lot of sporting things happen around us. We've seen what happens, punching your fist in the air and all that. वो चीज कहीं ना कहीं corporate lives में, student life में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में missing up, because winning is understood as a zero-sum game. समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं. जीरो सम गेम, यानी कि मैं तब जीतूंगा अगर कोई हारेगा. मेरे जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है, रौनक. That to my mind is one thing I'm trying to fix with Win Coach here. You do not have to compete necessarily. You do not have to be better than everyone in your class, in your office, in your organization, in your business, in your colony, better than the neighbors, to be seen, to be liked, to be loved, to be appreciated. नहीं, ये होड़ नहीं है. किसी से जीतने की जरूरत नहीं है. जीतने के लिए compete करने की जरूरत नहीं है. So I'm simplifying the thought of winning. We can win, like I showed in several situations. I made a great dinner for my family. They loved it. They gave me a hug back. As a homemaker, I'm very happy. I won today. I won their heart. Right? I did something out of my comfort zone. जो मैंने आज तक ट्राई नहीं करा, मैंने ट्राई करा, वो भी एक तरह की जीत है. मैंने किसी और को लाइमलाइट में लेके आ गया, खुद पीछे हट गया, let someone else take the credit, वो भी एक जीत है. I actually celebrated my country. Someone else won a medal. नीरज चोपड़ा मेडल जीता, लेकिन मैंने भी खड़े होकर शोर मचाया, अपना झंडा फहराया, वो भी एक जीत है. Right. चक्रे इंडिया
वो भी एक जीत है। मैं किसी को हरा नहीं रहा हूं, तो हराना जरूरी नहीं है। वी कैन फाइंड आवर ओन लिटिल विंस एंड दे डोंट हैव टू बी इन कंपैरेटिव फील्ड ओनली। मैं अपने आप से भी अगर कल से आज अच्छा हो गया, कल मैंने 20 चिन अप करे थे अगर इन द जिम, आज मैंने 22 कर लिए, तो आई शुड बी सेलिब्रेटिंग आई डिड समथिंग बेटर देन यस्टरडे। So just simple ways of winning. First of all, so it is not competing. It's not a zero sum game. मुझे किसी और को हराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, small little wins to be celebrated every day. मैं वापस अपने वो entrepreneurial journey पे भी आ गया। Do not wait for annual reports. Do not wait for the annual budgets. Do not wait for your life goals. Do not wait for how should people talk about me when I'm dead. कई बार लोग पूछते हैं जब आप नहीं रहेंगे तो क्या चाहेंगे लोग आपको कैसे याद करें। मैं कहता हूं भाई जब गिरा था मुझे वो स्नेह दे दें, let them respect me, love me, show me affection. That's what I want. I have not planned for how should they think about me when I'm no longer there. Right. How can people win every day in small ways, unique, simple, practical ways of winning every day. जीत इतनी भारी भरकम नहीं है, उसको जहन में इतना बड़ा ना बना लें कि जब तक मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चला जाऊंगा मैं उसको जीत नहीं मानूंगा। तो बेस कैंप पे पहुंच गए भैया तो उसको भी जीत मान लो, सेलिब्रेट जरूर करो। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने अपनी पहली डील ले ली। आई एम इन द ऑफिस, आई डिड माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, आई वाज इन द स्कूल, आई डिड दिस लिटिल रेस एंड आई वन समथिंग। मैंने अपने दोस्त के लिए ताली बजाई, उसको बाहर से जोश दिला के जिता दिया, ये भी एक जीत ही है। So learn to celebrate small little wins, and winning is not only about defeating someone else, competing. And third thing is winning is for everyone. ये बॉस मैं हैशटैग चला रहा हूं, मैं इस बात को पकड़ के बैठ गया हूं और बताऊंगा क्योंकि रिसेंटली वेरी बिग ब्रांड 4-letter वर्ड जो कहते हैं कि जस्ट डू इट, मैं उनको बताने वाला हूं डोंट डू इट, डोंट डू इट, because winning is for everyone. In one of their recent adverts about a month back, and I was busy with all of this, what was happening in my personal front, नहीं तो शायद मैं ये पहले बात उठा देता, लेकिन ये मुद्दा लेके आने वाला हूं, that please understand that winning is for everyone. इसकी कोई entitlement नहीं है, ये कोई inheritance नहीं है, इसके अंदर मुझे बहुत skilled और willed नहीं होने की जरूरत है। We can find ways to win, and everyone has an opportunity as long as you wish to win. You should be able to win, and that is what the Win Coach, and that is what I'm trying to do in this new avatar. कि मैं जीत को और बहुत simplify कर रहा हूँ, अलग-अलग तरीकों से दिखा रहा हूँ. I'm trying to show how different ways and how many ways we can win and celebrate, and we can do it every day. So the platform will actually help people realize that probably they're even already winning, but they're not even celebrating. वो जीत का एहसास ही नहीं है, जबकि जीत उनके पास है. Right. So this is what it is going to be. It could be for academics, it could be for students, it could be in careers, it could be for professionals, it could be for business people, the entrepreneurs. I could be a sports person, I could be a creative person, it could be relationship related, it could be personal life. Me time नहीं मिलता है, लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, मेरी ईमेल का जवाब नहीं आता है, मैं इंटरव्यूज में फेल हो जाता हूं, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, हर तरीके से लोग कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। वो सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार उनको हम जहन में बहुत बड़ा बना लेते हैं। सो आई एम हियर लाइक आई सेड as your Win Coach, trying to simplify those through this platform and come with sharing those learnings which I've also learned as a sponge from so many people, and 50-year experience of genuinely experiencing those wins, celebrating with people, with my genuine love for people. That is what your Win Coach will bring. And अगर आप जुड़ना चाहें योर विन कोच के साथ बहुत शीघ्र ही, दिस प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग लाइव. यू कैन ऑलरेडी गो टू www.yourwincoach.com, www.yourwincoach.com. You can find us there. You can fill a little form over there which ask about what is it that you wish to win, और आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इनवाइट मिलेगा और एक विन किट भी मिलेगी. So you can expect something, and this win kit will be delivered quicker than Blinkit. It's very exciting, So, and I am personally very excited कि मैं www.yourwincoach पे जाऊं और मैं पहले वहां पे एनालाइज करूं कि ये है क्या, ये what is this, and actually आपने बड़े सिंपल शब्दों में हम लोगों को बता दिया कि ये हमारे लीडर्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, सारे बैकग्राउंड से जो भी लोग विन करना चाहते हैं, who wants to celebrate their small wins. You must guys visit www.yourwin.com. and sir कोई other ways है, like you have created any kind of Instagram page or a kind of Facebook page, anything you have else, because it is very exciting. इसी नाम से सब कुछ आएगा. It is going to get live
very, very, very soon. Timing is around the corner. You Hmm. will get to know, if you will go on the website now and register, you'll be one of the first ones to actually know, और आपको पता चल जाएगा अब ये प्लेटफॉर्म अपने पूरे के पूरे औचित्य में, the entire identity and personality is now live. It will be there. It will be there on YouTube, it will be there on Instagram, it will be there on Twitter, it will be there on LinkedIn, it will be there on Facebook, on all Everywhere. platforms. Hmm. आप अभी से जाके अपने योर विन कोच को ढूंढ सकते हैं, आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे, एंड आई विल कम लाइव ऑन द वर्ल्ड प्रीमियर, but your win coach is already live. You can go and look for it on these platforms. वेरी एक्साइटिंग थिंग, एंड आई गेस सर ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आप लाने वाले हो ये लाइफ कोच के रिलम में, राइट? और ये बहुत ही बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाएगा, एंड आई गेस हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस पॉडकास्ट को शेयर, यू गाइस मस्ट शेयर इट अराउंड विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, विद योर नेबर्स, एवरीवन, बिकॉज इट इज वेरी एक्साइटिंग थिंग, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि आप लोग के पास खुद का योर विन कोच यू आर गोइंग टू गेट राइट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सुनील चोपड़ा सर, आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपने एक नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया, एंड ये बहुत एक्साइटिंग है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अभी जा रहा हूँ, पॉडकास्ट खत्म होगा मैं फर्स्ट क्रोम पे जाऊंगा, करूंगा विन कोच, एंड देन आई विल डू ऑन माय ओन, राइट? सो थैंक यू सर। Thank you. Thank you so much, Ronak, for so much of warmth and affection. And I've seen you as a young emerging leader making so much of an impact in people's lives. Truly, and I want to tell everyone, you've actually started your winning journey in a manner in that sense with us today because you were on this podcast with Ronak on his platform. तो आप सबको बधाई हो और इनको फॉलो करते रहिएगा। मैंने रौनक के पहले भी बहुत सारे शोज देखे हैं। I've seen the beautiful and amazing work you're doing, and I really appreciate and acknowledge Ronak. And this is the first thing I'm doing related to work after celebrating. I told you my father's 88 years of beautiful life, and I owed it to you because of how you approached, how you connected, how you reached out with all that warmth and affection and humility, and I really appreciate that. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चल के लोग आपके प्लेटफॉर्म के साथ इसी स्नेह के साथ जुड़े रहेंगे और ग्रो करता रहेगा। And yes, your win coach is there for you, Right. so do get connected so that he can do something for you. सर इट वाज एन एक्साइटिंग सेशन विद यू। ऐसा पॉडकास्ट मैंने आज तक नहीं किया। आई मीन मैंने बहुत सारे लीडर्स को, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को मैंने होस्ट किया, बट the kind of initiative you have taken, your win coach, is something unconventional and unique actually. So it is phenomenal. I'm eagerly waiting. So thank you sir for taking out your precious time from your busy schedule. और बहुत अच्छा रहा हमारा podcast, and we will connect soon again. Thank you sir. Look forward to. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत सर, बाय बाय।